नमस्कार, मैं विष्णु लांबा आज बहुत ही खुद को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि विश्व के महान नेता और महान पर्यावरणविद मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, संरक्षक, आदर्श संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख आदरणीय एरिक सोलिम के साथ हूं। ये मेरे लिए गौरव की बात है और एरिक सोलिम ने पूरी दुनिया के लोगों का मनोबल बढ़ाया है। मैं भी उनमें शामिल हूं और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं सबसे पहले भारत में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू इंडिया। Thank you so much. Good to be with a good man from Rajasthan. मेरा आपसे सवाल है, भाषा का आदान प्रदान सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपसे प्रेरणा लेने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। आदमी का जुनून, उसकी ईमानदारी, उसका काम इम्पोर्टेंट है और उसी की वजह है कि आज विश्व के महानतम नेता एक सामान्य बागवान से अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं आप, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। कैसा लगता है भारत युवाओं से मिलकर के, जो नई पीढ़ी पर्यावरण के लिए काम कर रही है, प्लास्टिक के लिए काम कर रही है, कैसा लगता है आपको? Kamagane, Rajasthan. Let me give a big vote of thanks to all the volunteers in Rajasthan and to you, the chairman of India, for all your great work, because it's exactly the people who do that grassroots work on the ground, which are, number one, improving the environment situation where they live, but also putting pressure and inspiring political leaders and business to do their work. Rajasthan, of course, has a huge potential for the environment. It's one of the most beautiful states in India. It has vast deserts, which can also be used for solar panels and for wind power. It has some of the biggest tiger population in India, and preserving that is, of course, very, very important. And you now see a number of tigers coming up in India. But tree planting and greening and fighting plastic, as you do, are very worthy, important environment causes. श्री कल्पतरु संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों से या भारत के अन्य कार्यकर्ताओं से भी, पर्यावरण कार्यकर्ताओं से भी, या विभिन्न माध्यमों से वो कैसे भी काम कर रहा हो, कल्पतरु संस्थान का कार्यकर्ता हो ना हो, कोई विषय नहीं है, उनसे आपकी क्या मोटी अपेक्षा है कि मुझे ये करना है, भारत में मुझे ये चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आपकी आशाओं पर खरा उतर सकें और संयुक्त राष्ट्र संघ के लेवल पर हम लोग सोच सकें, विचार कर सकें और उसको कुछ बड़ा कर सकें? First of all, I would like to thank all the volunteers for the work they are actually doing, because tree planting is great service to humanity and to Mother Earth. But also through tree planting, it may be useful to learn more about nature, to bond more to nature, to go out and look to all the beauty of nature, all the fantastic animals which are there, all the fantastic trees which are there, and learn more about nature, and also about how you can promote environmentalism in dialogue with political leaders and business. Because you need all these forces, the volunteers, the political leaders like Prime Minister Modi, and for sure the big business. Then we will transform the world and make Mother Earth a much better place. आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया है। आप पूर्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, पर्यावरण प्रमुख के रूप में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी आप उन्हें दे चुके हैं, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट और ग्रीनरी विकसित करने के लिए, फॉरेस्ट कवर, ग्रीन एरिया कवर करने के लिए। मोदी जी से किस तरह की एक समझ पैदा हुई आपके बीच में, किस तरह का संबंध पैदा हुआ है जो मानवता के लिए आगे जाकर के बड़ा लाभान्वित होने वाला है, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज, दूसरे भारत के लिए ही नहीं, अन्य देशों के लिए भी, विश्व के लिए भी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे महान वैश्विक नेता आदरणीय एरिक सोलिम कैसे मिलकर के और पूरी दुनिया के लिए बड़ा करने जा रहे हैं? I decided that the UN should honor Prime Minister Modi with this great award, Champion of the World, Champion of the Earth, because he has been leading India into a greener path and then inspiring the world. He picked up the fight against plastic pollution and has now banned a huge number of single-use plastic items which India and the world do not need.
and he has formed the International Solar Alliance and promoted solar energy in India, and is now also a great promoter of green hydrogen in India. This is very important for India, very important for the world, and of course by honoring Prime Minister Modi, and not just honoring him as an individual, but also honoring India for its great effort to go in a green direction. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करके हम सब भारतीयों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपने कल भारत के हमारे नए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से भी मुलाकात की है। क्या आगे की योजना महसूस करते हैं? क्या लगता है भूपेंद्र यादव कुछ कर पाएंगे इस डिपार्टमेंट के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए? I was very impressed by Bhupendra Yadav ji, and of course I know he comes from Rajasthan, so he's from your state. He also has a fantastic background for becoming the Minister of Environment, because he was an environment lawyer, has written substantially about environmental law, and that will of course put him make him very well placed to change India by using environmental law. So I'm very optimistic that he will work with the Prime Minister and other ministers to make great progress for India in the environment area. Thank you. कभी कभी मुझे तकलीफ होती है, कुछ इस तरह की बातें मैं देखता हूँ दुनिया में जो हमें निराशा की ओर ले जाती है। जैसे ब्राज़ील के माननीय राष्ट्रपति श्री बोलानसारो अमेज़न के जंगलों में आग लगाने वाले भी थे, उसमें शामिल पाए गए अप्रत्यक्ष रूप से, जो हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात थी। और अभी कोविड में भी उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया, तो बहुत तकलीफ हुई। पर्यावरण के लिए आप बोलानसारो को किस तरह से देखते हैं? First of all, Brazil is a fantastic country, one of the most beautiful in the world, with the biggest rainforest in the world, and a very dynamic population, which has also improved the living standards substantially over the last decade. So I really love Brazil. But the president is not the right man for the task. He continued to bring down deforestation as he has increased it substantially. For 10 years, the deforestation in Brazil in the Amazon went down. Fantastic positive development, saving enormous amount of trees and of course animals, and very good for climate protection. And then when he came into office, it started going up because of his wrong policies. And on COVID, it may be even worse. Hundreds of thousands of Brazilians have died, completely unnecessary, because the president did not protect them, did not provide vaccines, did not recommend using masks, did not recommend social distancing, simply didn't do anything on what is now completely normal in India. All Indians keep social distance and use masks and take vaccines. Why shouldn't the president of Brazil recommend exactly the same to the people of Brazil? आपको पूरी दुनिया में एक शांति के मसीहा के रूप में देखा जा रहा है। लोग आपको जहां भी देख रहे हैं, वहां आपका इतिहास जो है वो प्रेरणाओं से भरा पड़ा है। आपने हर जगह एक इंस्पिरेशन देने का काम किया है। आप घबराए नहीं और आप लिट्ठे जैसे लोगों के बीच में जाकर भी अपना विषय रखा, और वहां भी आप काफी हद तक कामयाब रहे। क्या था लिट्टे मिशन और कैसे आपका उसमें जाना हुआ और क्या सीखने और सिखाने को मिला? Norway was a small, faraway country, and we were asked to be the peace negotiator in Sri Lanka. We were also acceptable to India, so I related a lot to the Indian leadership at the time in Delhi to find a ways to bring peace to Sri Lanka. It was a very brutal war. Maybe 100,000 people were killed. Nearly all I had contact with on the LTT side at the end died, but also so many people on the government side died. Died in war, died in terrorist attacks, died in so many different ways. It was so sad to see.
For very long, the peace process in Sri Lanka was very successful, and for a number of years there were no killings at all in the country. But then, sadly, the two parties brought back the war, and it ended in massacres in 2009. The tens of thousands of Tamils were unnecessarily killed. Of course, still there is no real solution to the Sri Lanka problem, because Tamils feel as a secondary people in a country dominated by Sinhalese, and that cannot continue. We need to establish a federal model with both Sinhalese, which are the vast majority, and Tamils and Muslims all feel welcome and respected in the same state. कुछ लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सेव एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, सेव ये वो अर्थ, मदर अर्थ, वहीं तक सीमित हैं। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। तकनीकी ज्ञान का अपना उपयोग है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनकी तरफ से कुछ नहीं होता है, जबकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग भी हो सकते हैं, यूएन के लोग भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उनको जमीन पर आकर काम करना चाहिए? I fully agree with you. Obviously, you need conversations in a conditioned room, as you know, but you also need political leaders who go out, being with people, sharing the burden of the people, and being active with the people. And if we look at history, the greatest leaders we can think of, they all were there right out with the people. Mahatma Gandhi, the greatest Indian of all times, maybe the greatest human being of all times, he was always out there with the people, leading short marches, speaking to people. He was even traveling third class in Indian Railways all the time. So that is what we should look for, inspiration from those leaders who were out for the people. Leaders cannot just hide behind those doors in air conditioning. भारत के माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ग्रीन रेलवे पर फोकस कर रहे हैं। क्या इस संबंध में वार्ता होने वाली है? क्या इस संबंध में अश्वनी कुमार कुछ विशेष करने वाले हैं? अश्वनी वैष्णव, I see a lot of good progress with Indian Railways. They, for instance, are making bypasses for animals, so that elephants or other animals or tigers, other animals can cross either under or over the rail lines. This is very good work. And you also see new and more modern equipment coming into Indian Railways. That also, I believe there is a big job to be done to modernize Indian Railways. In China, of course, you now have high-speed rail between all major cities. They run up to 350 kilometers per hour, so you have easy connections. If you have the same speed of connections in India as in China, it will take maybe 1.5 hours from Jaipur to Delhi. And of course, that makes railway competitive to aircraft in a completely new way. So yes, indeed, I see great progress with Indian Railways, but I will encourage also India to step and look into what's happening in China. Also on metros in cities, China is the lead nation in the world now, but India is very, very fast keeping up. In Mumbai, they are now planning 16 metro lines. In Chennai, there is huge plans. So in Nagpur, they are building, many Indian cities are now building metros. And of course here in Delhi, it's a beautiful working metro system. मैं जितना समझ पाया हूँ अश्वनी कुमार वैष्णव को, अश्वनी वैष्णव बहुत एनर्जेटिक है और बहुत ही आशाजनक काम कर रहे हैं। निस्संदेह हमें आशा है कि जिस तरह से आपने बताया इस दिशा में भारत और ग्रीन रेलवे की तरफ आगे बढ़ेगा, ऐसी हमें आशा है। दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, स्पेशली यमुना रिवर पोल्यूशन। मिस्टर अरविंद केजरीवाल यहाँ के ऑनरेबल सीएम हैं। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को, सीएम साहब को? First of all, I think again there is lot of good progress in Delhi, improving quality of life for people. But I believe that the modernizing the vehicles will help for air pollution. Because if you can turn into electric vehicles, I know that the Chief Minister set up programs to go into electric vehicles, 2-wheelers, 3-wheelers, 4-wheelers, and for electric buses. All that will help. And another very important matter is to put a stop to all the burning of agricultural waste in Haryana and UP and around Delhi, which create such an enormous smog in Delhi. And I think the way there
would be to establish a value to that agricultural waste and make it into bioprocessing factories, which either make fertilizer or energy from these. The farmer can get some money to sell the waste to make energy, because he will much prefer that rather than burning it on his own farm. हमारे लिए क्या आदेश है और हम कितना जल्दी मिल रहे हैं? I really hope to see you at the Joyful Sharing Festival. I think that will be a great event, and I think the two causes you really picked up, which is tree planting and fighting plastic, are both extremely important. They are both protecting Mother Earth in a fantastic, beautiful way. आपने जब ट्वीट किया है तो हम लोगों को बहुत ताकत मिली और सब लोग हमारे साथ जुड़े और मैं जिंदा बच गया. Activists like my friend Vishnu Lamba and so many others in India and in the rest of the world are doing extremely important work. They protect Mother Earth and they encourage political leaders and business to be much more proactive. So I encourage all state authorities to make sure that they get the protection needed and stop, of course, any sort of attack and violence against environmental activists. That's simply despicable. आदरणीय एरिक सोलिम, वैश्विक नेता, महान पर्यावरणविद, मेरे जैसे करोड़ों लोगों के आदर्श आज के साथ में मेरे जीवन का बड़ा दिन है कि आज आपके साथ बैठने का मौका मिला, बातचीत हुई कई विषयों पर, कई प्रकार की बातें को आपने बेबाकी से जवाब दिया. मुझे आशा है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे. स्पेशली राजस्थान में जो कार्यक्रम होने जा रहा है जयपुर में, उसमें आप बहुत जल्द आने वाले हैं और आपके साथ कई सारी देश और दुनिया की बड़ी हस्तियां आने वाली है. तो इन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा. मेरे जो सामान्य कार्यकर्ता पर जो आत्मघाती हमले हुए उसका भी आपने ध्यान रखा. मैं आपका आभारी हूं. और आपने सबसे बड़ी बात, अपने बात की शुरुआत खमा घनी राजस्थान से की. मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारे जमीनी स्तर की बातों को पकड़ के रखा है और मुझे आशा है कि हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.